Hello everyone, welcome back. This video lecture for class 7 subject science chapter number 15 and that is water. So dear students, in previous video lecture we have already completed one portion of this chapter related what are the forms of water, what is the water cycle and what is the water playing important role in our lives. Today we are going to discuss about the scarcity of the water, how water is scarce from our planet and how we can conserve water to survive, to protect our future generation. But before that, a short shlok. Let's start. Join your hands, close your eyes. वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. So dear students, once again good morning to all. So in previous video lecture we have talked about how in villages how the people are fetching water from the wells and other water bodies, other water sources also like river, ponds, bawris. These also also are the water bodies or water sources from which people fetching water up till the date, है ना. आज तक भी कई लोगों में वाटर की स्केर्सिटी के कारण हम बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. सो हियर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट how these people are facing such problems and what is the solution for that problem. So let's start. First we are going to discuss about, so before understanding the concept what is the scarcity and how water is scarcing on this planet from this earth, before that we have to discuss about the groundwater, that is an important source of water. So what is the groundwater, what is the water table, what is the infiltration and what is the aquifer, isn't it? So first of all we will discuss about the groundwater. So here as is the figure is given, here you can able to see the word that is mentioned at water table, right? The word that is mentioned at water table. So what's the mean by water table? So we can say if we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist, है ना. कोई भी एरिया जहाँ पे ऑलरेडी वाटर बॉडी हो उसके नियर वाले एरिया को अगर हम डिग करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड दैट टाइप ऑफ सॉइल विच वी आर गेटिंग आफ्टर डिगिंग, दैट सॉइल इज मॉइस्ट, है ना. अब अगर उसको आप डीप में और 1 मीटर और 2 मीटर और डीप में आप इसको डिग करेंगे तो वी विल गेट somewhat water. Okay, the moisture in the soil indicates the presence of water underground, है ना. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with वाटर. ओके, जो हम अगर डीप में उसको डिग करते जा रहे हैं तो उसमें बीच में जो सॉइल या मोटे से क्रैम पत्थर के स्टोन्स के मिल रहे हैं या रॉक्स मिल रही है, उनके बीच बीच में हमें कुछ वाटर का लेवल दिखाई देता है ना. और वी कैन से that type of soil is filled with water. So the upper limit of this layer is called water table. The upper limit of this layer where we are going to dig, where we had gone to dig the soil at that place where some rocks are also there, and between our rocks and the soil particles, in the gaps of soil particles we will get there is a water. Okay, and this is known as water table. Okay, this is known as water table as it is mentioned here. Fine, and you can able to see this is the layer that is known as the water table, and this is the layer where soil is most and the in the between of the rocks and the soil particles the water we can get. So this
level is known, this surface is known as water table. Now वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, हर जगह पे वो डिफरेंट होगा. इफ़ द प्लेस दैट इज़ द नियर बाय सी और एनी वाटर अदर एनी वाटर बॉडीज, दैट टाइप ऑफ soil surface will get, we will able to get the water table is high, isn't it? The surface of the water will be high. But if we are getting at the drought area or any desert area, that type of soil will not be moist, है ना, वो वाले एरिया में आपको मोइस्ट स्किन में नहीं दिखेगा. सेकेंड थिंग, वो वाले एरिया में यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द वाटर टेबल, isn't it? So water table, that is also a concept that will be also varies from place to place, as our India is, there is a very much differentiate, there is a very much varies in each part or each region, and it may even change at a given place. So the water table may be at a depth of less than a meter or maybe several meter below the ground. Obvious, जो एरिया वाटर बॉडीज़ की नियर होगा वहाँ पे शायद हमें 1 और 2 मीटर डिग करने पे ही हमें वाटर लेवल मिल जाए, है ना, वाटर टेबल लेवल मिल जाए. बट at the places which are known as drought area, so such type of places we will not able to find out the water table easily. At that places we have to dig several meters or more than 1 to 3 meters, isn't it? So at that time we will be able to get only water table. And below the water table, I am repeating, below the, just now we have talked about the water table, and if you want to dig still deeper in the water table, और भी water table के deep में हम dig करने जाएंगे तो we will be able to get ground water. Okay, what is the groundwater? What is the source of this groundwater? Let's see. The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seep through the soils and fill the empty space and cracks deep below the ground. Okay, क्या करता है जब रेन वाटर में सॉइल में वो वाटर कंजर्व होता है, सॉइल में वो वाटर अब्जॉर्व होता है, तो वाटर अब्जॉर्व सीपिंग करने के बाद वो वाटर भी और भी सॉइल के नीचे वाले एरिया में जहाँ पे रॉक्स और क्रैक्स वगैरह है वहाँ पे फिल हो जाता है. ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन. व्हाट कुड बी से? Filtration. So that type of process is known of infiltration. I am repeating, the process of seeping of water below the underground water, right? Below the underground water, the process of seeping of water into the ground is called infiltration. Repeating, first thing we have talked about the water table. First thing we are talking about the water table, and second thing we have talked about the, what is that? That is the groundwater. So water table is the surface or we can say the layer of the limit of the water, है ना, लेकिन deep में उसको और dig करने जाएंगे तो we will be able to find out the groundwater. And what is infiltration? The rainwater from water and other from water sources when it is seepaging, when the process of seeping of water from the soil is known as the infiltration in the ground. So here we can see the groundwater thus gets recharged by this process. इसी process के through, suppose rain water हमारा rain water के through soil में पानी fill हो गया, rocks में, cracks में, under the groundwater level, water storage process is going on with the help of infiltration, and this process must be going on to recharge this process. Okay, at places the groundwater is stored between the layers of hard rock, है ना, कुछ places ऐसी होती है जहाँ पे ground water stored होता है between the layers at hard rocks below the water table. Okay, below the water table. देखो water table के, see you will able to find out below the water table. Here are some rocks, है ना, कुछ rocks में, cracks में पानी स्टोर हो जाता है. Here some rocks are seen.
सो रॉक्स के और क्रैक्स के बीच में अंडर द वाटर टेबल के नीचे जहाँ ग्राउंड वाटर है वहाँ पे जो वाटर स्टोर हो जाता है बिटवीन द हार्ड रॉक्स एंड सम अदर टाइप ऑफ क्रैक्स बिलो द वाटर टेबल, एंड दिस इज नोन एज aquifer. This is known as it is written over here. This is known as aquifer. Fine. Hope so you all have understood what is the aquifer. Below at the places groundwater is stored between the layers of hard rocks and some other types of hard stones below the water table, and this is known as aquifer. So water in the aquifer can be usually pumped out with the help of tube wells and head pumps, and this process generally occurs in villages or where the agriculture process is going on. जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है और जहाँ पे ये सारा फार्मर्स के थ्रू जो सारा फील्ड में क्रॉप मैनेजमेंट में वर्क किया जाता है, एट दैट टाइम दिस थिंग इज़ ऑल्सो managed, and this thing is also notified that nearby aquifer is there and groundwater level is there. So with the help of aquifer farmers can easily irrigate their farming or agriculture. They can easily get the water for the plant for plantation. So one thing I want to share with you, have you ever observed that the site where the construction work is going on? Obvious, almost from among of us we have already noticed the thing that how constructor working है ना, where do the workers get water for the construction? अब ज़रूरी नहीं है ना जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वो नियर बाय हमारे घर के या जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो वहीं पे हो. कंस्ट्रक्शन कई बार हमें जंगलों में हाईवे रोड्स पे भी दिखने को मिलता है, इजंट इट? सो हैव यू एवर थॉट दैट सच टाइप ऑफ वाटर, सच टाइप ऑफ फार्मर्स और वर्कर्स फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग वाटर फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क? So maybe you have seen boring being done at the such sites. उन sites के नियर बोर का पानी से हम जनरली वो वाटर से अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को कंटिन्यू कर पाते हैं. सो एक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग. कैन वी कीप ऑन ट्राइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड? हाउ विल इट इफेक्ट द वाटर टेबल? फाइन. सो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को ऑब्वियस इफेक्ट करेगा. सपोज अंडरग्राउंड वाटर हम हेड पम्प्स के थ्रू उन पानी को अगर निकाल लेते हैं फार्मर्स के थ्रू और इधर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के थ्रू वो पानी हेड पम्प्स के थ्रू या बोर के थ्रू वो अंडरग्राउंड वाटर निकाल लेते हैं. सो ऑब्वियस इट विल इफेक्ट द वाटर टेबल, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर तो आपका यहाँ पे है और यहाँ से अगर आप पम्प्स के थ्रू वाटर ले लेते हो पाइप्स के थ्रू, सो ऑब्वियस वाटर टेबल विल बी ऑल्सो इफेक्ट. वहाँ पे लेवल वाटर का कम हो जाएगा, राइट? सो हाउ डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल इफेक्ट है ना, कैसे वाटर टेबल डिप्लेशन में चला जाता है, और वी कैन से व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. लेट्स स्टडी अबाउट इट. So here you will able to find that some trees are given है ना. This is the scene of forest. Forest में trees गिर रहे हैं. You are able to find that trees को कटिंग किया जा रहा है with the human efforts we can say, or with the natural disaster. But generally here is the given is the reasons of the human activity, due to the human activity or due to the humans needs, to fulfill the human needs, farmers or some other people's cutting these trees. अब अगर ट्रीज़ कट जाएगी, हमारा फॉरेस्ट ख़त्म होता जाएगा, तो ऑब्वियस हमारा वाटर का सरफेस लेवल, वाटर टेबल लेवल कम होता जाएगा. क्यों? बिकॉज ट्रीज़ आर द वेरी मच helpful to soil erosion, as we already learnt in previous chapter or in previous classes also. What is the soil erosion? So what is the soil erosion? Here we can say by the different agents like air, water and sunlight, by the natural different agents, when soil is stopped and when soil will स्टॉप द वाटर लेवल, वाटर रेन वाटर को फिल होने से, बह जाने से, फ्लो होने से बचाने के लिए रूट्स अपने अंदर सॉइल, जो सॉइल की रूट्स में जो सॉइल होती है वो वाटर को अपनी ओर
एब्जॉर्व कर लेती है। अब सपोज वॉट एज ट्रीज ही नहीं होंगे, प्लांट्स ही नहीं होंगे, तो वाटर को ऑब्जर्व किसके थ्रू होगा? सॉइल भी नहीं होगी, सॉइल इरोजन सपोज हो जाएगा, ट्रीज नहीं होंगे तो, और सॉइल इरोजन होगा तो वाटर को स्टॉप करने का प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। वाटर विल फ्लो इन डिफरेंट water bodies, isn't it? So this is the main reason where we can say due to the depletion of the water, due to the depletion of the forest or continuously cutting down of the forest will affect the depletion of water table, isn't it? Second reason which we are observing here in second figure. Okay, here second figure we are observing that this is the increasing of the population. The second reason of the depletion of water table, that we can say that is the increasing of population. So if once increased population creates demand for the construction or houses, है ना, shops, office, roads, pavement, everything should be increased ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उनके लिए रहने के लिए घर भी चाहिए, उनको शॉप भी चाहिए, ऑब्वियस इतनी सारी पब्लिक रहेगी तो उनके लिए रोड्स भी ज़्यादा चाहिए, ऑफिस भी ज़्यादा चाहिए, है ना. तो अगर ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्रीज होता जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल इफेक्ट द डिक्रीजेस, इट विल due to the increasing of population, the decreases the open area like park, playground. This will also turn in different type of construction work, है ना, and this in turn decrease the seepage of rain water into the ground. Obvious, अगर कच्चा ज़मीन नहीं होगा, पार्क नहीं होंगे, प्लेग्राउंड्स नहीं होंगे, ओपन ग्राउंड्स नहीं होंगे, so water seepage process will be fall down, and due to this reason water table will be decrease or depletion, because at the pakka floor it does not allow water to seep in easily, है ना, water easily seep नहीं हो सकेगा due to the pakka floor. So for seepaging of the water by the soil, there is must that particular road or that particular floor must be kacha, while in a grass lawn water seeps through in on time. So this is the reason of the depletion of water table. So first we have talked about the decreasing of the forest or cutting down of the trees or forests. Second reason, as we have shown in as it is shown in this figure, the increasing of the population. And third, as you are able to see here in the second figure, again the increasing of the population, increasing of the industries. Water is used by the all industries, almost everything the in the each and every production water is must, as we all know in this planet, for the survive for each and every creature, either it is non living or living, both of the organism, both are needed for the water, है ना. तो अगर वाटर नहीं होगा, वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली. वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ड्रॉन फ्रॉम दी ग्राउंड, एंड उन इंडस्ट्री को कंटिन्यू करने के लिए उन इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन बन रहा है, उन सब में वाटर चाहिए. एंड दैट industries, those type of industries are having water from only water bodies or from the drawn from the ground. और अगर ground से वो drawn करते जाएंगे, so what will happen, obvious, it will again affect the depletion of the water table, right. So here we have talked about the three reasons which affect the depletion of water table. That first is cutting down of the trees, second increasing of the population, and next is the increasing of the industries. Remaining portion, second agriculture activities are also there. So let's चलो ये भी कंटिन्यू कर लेते हैं. अ मेजोरिटी ऑफ द फार्मर इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरीगेशन देयर क्रॉप्स. अपनी क्रॉप्स को इरीगेशन के लिए वो जनरली किस पे डिपेंड होते हैं, रेन वाटर पे. और रेन वाटर irrigation systems such as the canals, and they also only in a few places. So even these systems may suffer from the lack of water due to the erratic rainfall. Okay, so these are the reason which affect the water
table. In next video lecture, we will discuss about the distribution of water and what is the water management, how we can conserve the water for irrigation and for different purposes. Till that, take care. Goodbye.